फ्रेंड्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट शॉर्ट लेक्चर सीरीज में आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में जानेंगे। मैं आपका होस्ट प्रोफेसर मनोज कुमार राव। इस कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको। भाई जानते हैं तो सप्लाई चेन रेजिलियंस के कॉन्सेप्ट के बारे में। द एबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन्स कैन रिमेन अनअफेक्टेड बाय द एडवर्स इवेंट्स such as natural disasters, economic or political instabilities, black swan events, or COVID-19. So these are the that is known as ability of supply chain which is not affected by, और द सप्लाई चेन रेजिलियंस मतलब ये होता है कि सप्लाई चेन इज नॉट अफेक्टेड बाय दैट इन नेचुरल डिजास्टर की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटीज और कोविड-19 की वजह से नॉट अफेक्ट होता है। So the next important point, supply chain resilience is the ability of a supply chain to withstand, adapt to, and recover from disruptions or minimize their impact on the operations, costs, customers, ultimately transforming into more desirable states. So यही सब नेचुरल जैसे मतलब फैक्टर हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज, कोविड-19 की वजह से it should not be affected, but it withstands to minimize the impact in operation, cost, or customers to convert into that known as desirable states. This is the concept of your supply chain resilience. So अगर हम लोग ट्रीज ऑफ सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। जैसे रेजिलियंस दो तरह का होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, एक रिकवरी होता है। सो रेजिस्टेंस जो है काफ़ी सारे कंपनी उसको एवोडेंस और कंटेनमेंट में कन्वर्ट करते हैं, एंड रिकवरी के लिए दे गो फॉर स्टेबलाइजेशंस और रिटर्न्स। सो हाउ द कंपनी आर basically stand or withstand against the supply chain resilience. The first important part is mitigations, the second one is response, the third one is recovery, and the fourth one is adaptation. So in case of mitigations, taking the step to reduce the probabilities and potential impact of disruption before they occurs. जैसे कोविड-19 का सिचुएशन हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, कैसे उसको मिटिगेट करना है और उसका क्या प्रोबेबिलिटी है दैट शुड बी रिड्यूस in case of supply chain resilience. Next one is response, the ability to react swiftly, effectively when disruption is happens. So जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी होता है, काफ़ी सारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी they can implement the supply chain resilience to react very swiftly and try to that is known as implement various amount of strategy effectively to avoid the supply chain resilience. The next one is recoveries, the capacity to return to normal or even improve operation after disruption. That is all. Many supply chain management company has implement different amount of strategies how to recover on the capacities, return to the normal state to avoid the supply chain resilience. The next is adaptations, adjusting the supply chain processes and strategies to new challenges and conditions. So, depending upon the type of that is known as disruption, which is directly affect the supply chain resilience. So, company are implementing different amount of, as I told, strategies to tackle these kind of challenges and conditions. और इस इमेज में काफ़ी सारे मतलब सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी दिया हुआ है, सप्लाई चेन रेजिलियंस स्ट्रेटेजी। सो पहला स्ट्रेटेजी है आपका डाइवर्सिफाई योर सप्लाई चेन नेटवर्क। सेकेंड स्ट्रेटेजी हो गया बिल्ड रेजिलियंस इन्वेंट्री मैनेजमेंट। थर्ड स्ट्रेटेजी हो गया हार्सनेस द पावर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज। कंपनी मस्ट अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी टू अवॉइड द डिस्ट्रप्शंस। द नेक्स्ट इज नेचुर स्ट्रॉन्गर सप्लाई रिलेशंस, मैप द रिस्क or mitigate the risks. The next is strengthen your transportation and logistics. And the last one is sustainability as a resilience strategies. So these are the key strategies to avoid distortions which is unaffected the supply chain management of a particular company or operations. वीडियो अगर आपको अच्छा लगे
Kindly like, share, and subscribe these channels. Thank you for watching this video.